ఇక ఏ ధర్మం మీదైనా సరే ఇలాంటి అపవిత్రం ఒక చర్చి మీద జరిగిన, ఒక మస్జిద్ మీద జరిగిన దేశం అల్లకల్లోలం చేసేస్తారు, ప్రపంచం అంతా మాట్లాడతారు, గ్లోబల్ న్యూస్ అయిపోద్ది. కానీ దేశంలో కోట్లాది మంది హిందువులు అపవిత్రమైతే, ఈ ప్రసాదం అపవిత్రమైతే ఒక్కరు కూడా మాట్లాడకూడదు, ఇది సెక్యులర్ వ్యవస్థకు విఘాతం అంటే హిందువులకి మనోభావాలు ఉండవా? ఇది ఒక్కరు నిందించట్లా, అసలు మీరు ప్రస్తావన చేయకూడదు, ఇది తప్పు, ఇది మాట్లాడకూడదంటే ఎట్లా? ఇదే వేరే మతానికి మీరు అన్వయిస్తారా? దోషులకి శిక్ష పడాలి. ఫుడ్ అడల్ట్రేషన్ అయింది, మేము కాదంటలా. టీటీడీ బోర్డు, అప్పుడు టీటీడీ బోర్డు బాధ్యత తీసుకోవాలి. The executive officer of Tirumala Tirupati Devasthan also met Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu. As per sources, the TTD officials submitted a comprehensive report on the ongoing controversy. And sources are also telling your channel that the government will decide its next course of action based on that report. It will consult leaders from the Agama, Vedic, on Dharmik Parishads and decide on the rituals that are to be conducted in the mandir to restore its sanctity. Meanwhile, devotees of Lord Balaji are queuing outside the temple to offer prayers and obeisance. Is there an element of doubt in their mind after the controversy? What are their expectations from the government? Listen in. We have come to know there is animal fat, beef fat was used in the making of laddu. I don't know it is true or not, but it should not be made. Laddu should be made with cow ghee because we know Venkateshwar Swami is very divine, powerful. It should not be adulterated at any cost. Investigation should be done. I came to know it is done by Gujarat lab. I heard about it. But they should investigate more. Recently, the laddu issue is happening here. So, the government needs to take some good restrictions to prohibit those happening in the laddus. It should be strictly prohibited since the laddus are very precious to the god and this is the powerful Hindu god temple. It should not be occurred here. The new government can take some measures so they can stop the previous laddu options and all and they can start new process. Otherwise, the Hindu god temple, it should be taken seriously throughout the India. Like whatever it is, we always pray for the good for God and we hope it will be increased and the quality has to be good and the issue has to come down and it has to solve by the present government. Now in Delhi, posters have been put up at a Venkateshwara temple managed by Tirumala Tirupati Devasthanam. The posters say sanctity of our prasadam has been restored. Watch this report filed by Abhishek in Delhi. तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद को लेकर जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से रिपोर्ट के अंदर ये दावा किया गया था कि जो लड्डू है उसके अंदर जो एनिमल फैट है उसका इस्तेमाल हुआ था, उसके बाद से ही चाहे भक्त हो, चाहे जो पुजारी हो या फिर नेता हो, वो लगातार इस पूरे मामले के ऊपर बढ़ते हुए नजर आए थे और उसके बाद जो कई सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं वो भी इस पूरे मामले में देखने को मिली थी। ये दिल्ली का तिरुपति बालाजी मंदिर है, यहाँ भी जो तिरुपति से प्रसाद है वो आता है उसी जगह से जहां का ये पूरा जो विवाद है वो बताया जा रहा है और यहाँ भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आते हैं, पूजा करते हैं और शनिवार और रविवार के दिन काफी ज्यादा भीड़ होती है इस मंदिर में और मंदिर में भंडारा भी कराया जाता है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। स्पेशली जो दक्षिण के लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर जो पूजा अर्चना है वो करते हैं, वो नजर आते हैं यहाँ पर। और तमाम लोग जब यहाँ पे आते हैं, पूजा करते हैं तो यहाँ से जो लड्डू है वो भी खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। सर भी आए हैं। सर, आप मंदिर पूजा करने आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले हैं। अच्छा, ये जो पूरा कंट्रोवर्सी था बालाजी प्रसाद को लेकर, आपको क्या लगता है क्या था ये पूरा कंट्रोवर्सी और कितना गलत है ये? नहीं, कितना गलत, अभी कोर्ट प्रोड्यूस गया, जो भी चल रहा है उसका प्रोसेस चल रहा है, अब उसको देखना पड़ेगा। उसके अलावा जो भी करें गवर्नमेंट में आए और या पॉलिटिकल ना हो, ये इशू नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, पर इसमें कोई बहुत बड़ा इशू ना होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए। आप लोग प्रसाद खरीदेंगे, लड्डू यहाँ भी तिरुपति से आता है? हाँ जी, हाँ जी। ये एग्जैक्टली मेरे को आइडिया नहीं है, वो एज पर उनका गाइडलाइन से जो चलता है वह चल। तो खरीदेंगे लड्डू इधर प्रसाद? हाँ, जरूर खरीदेंगे, जब विश्वास है उसका। आप भी सर आए हैं, पूजा हो गई आपकी? हाँ, पूजा होगी। आप कहाँ से आते हैं, कहाँ रहने वाले? मैं
नोएडा पे आते हैं। अच्छा, मतलब ये क्या आप साउथ से आते हैं, दक्षिण साउथ कहाँ से आए हैं? चेन्नई से। चेन्नई से। हाँ, हाँ। अच्छा, ये जो तिरुपति बालाजी का जो प्रसाद को लेकर जो विवाद है, आपने सुना होगा, उसको लेकर क्या लगता है आपको, कितना सही है ये, कितना गलत है, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो कितना गलत है? बट अभी गलत नहीं है ये, देख रहे हैं पोस्टर पे, आई मीन दे हैव क्लियरली मेंशन्ड एवरीथिंग इज गुड राइट नाउ, सो नो इश्यूज एट ऑल। अभी आप लोग खरीद रहे हैं प्रसाद? हाँ, यस इट इज अवेलेबल हियर। तो तमाम भाग I am the future that was born 100 years ago. I am the purpose that emerged with India's independence to be a force for business that makes doing good our business. Towards an independence where knowledge sets us free to think big and achieve bigger. Towards a future made perfect and be a force creating abundance. Because independence is not a moment in history, it's a never-ending path to prosperity. Aditya Birla Group, a force for good.